वेलकम टू StudyIQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, पार्ले। पार्ले शब्द का डायरेक्ट मीनिंग होता है बातचीत करना, डिस्कशन करना, निगोसिएशन करना अपने एनिमीज या ओपोनेंट्स के साथ। जैसा कि आप इमेज पे देख सकते हैं, सो अ डिस्कशन और अ नेगोशिएशन विद एनिमीज, अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन एनिमीज एंड ओपोनेंट्स. Let's look at the usage. In an effort to win the goodwill of the locals, the real estate developers parleyed with them before finalizing plans for the massive mall. If your siblings are fighting, then you may need to encourage them to parley in another room so that they could iron out their differences. Iron out their differences. Iron out is a good usage of word जिसका अर्थ होता है कि आप किसी भी तरह के भेदभाव को eliminate कर देते हैं. You're trying to iron out the differences, to resolve a dispute, to eliminate differences. So this is a good usage of phrases that you can use. Moving on to the next word, olive branch. Olive branch actually parley का ही एक सिनोनिम है जिसका अर्थ होता है शांति का प्रस्ताव रखना. Olive branch, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, is basically peace offering, reconciliation, and offer of reconciliation. A peace offering को हम olive branch कहते हैं. Let's look at the usage. The government refused to offer the olive branch to the opposition. The winner extended an olive branch to his opponent by calling him a great player. इसके synonyms हो जाते हैं peace offering, parley, hand of friendship, outstretched hand, friendliness, dove of peace. So जब भी आप extend कर रहे हैं a hand of friendship to an enemy, to an erstwhile enemy, उसके लिए extending of olive branch का use करेंगे. Moving on to the next word, terse. Terse शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त में बोल देना, कंसाइज वे में बोल देना, बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करना, जितना ज़्यादा हो सके कॉम्पैक्ट वे में बोलना. और कभी कभी ये रूड भी हो जाता है, इसीलिए कर्ट भी बोलते हैं टर्स का मीनिंग. सो टू बी कंसाइज, टू बी ब्रीफ, समटाइम्स इट बिकम्स रूड, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, बीइंग एब्सोल्युटली क्रिस्प एंड डिवॉइड ऑफ सुपरफ्लुइटी. लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड टर्स. One should write essays in a terse manner, in a concise and brief manner. He presented a terse summary of his trip to the managers. बिल्कुल brief. So a brief and direct way of saying something जो कि कभी कभी rude भी हो जाता है, curt भी हो जाता है, as we saw. So laconic, something that is brief, something that is compact, उसके लिए हम terse शब्द का प्रयोग करेंगे. These are all important synonyms of the word terse. Moving on to the next word, occlude. Occlude शब्द का अर्थ होता है रोक देना, स्टॉप कर देना, जैम कर देना, ब्लॉक कर देना. occlude के मीनिंग होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, to obstruct, to block, to jam और to close up. ये कई बार मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी प्रयोग किया जाता है. For example, the heart surgeons or the medical surgeons are looking for occlusions in the blood vessels. Let's look at the usage. The police officers have blocked off the road to occlude the bomb from the public. Since I don't like people looking inside my house, I use curtains to occlude my windows. So block कर देना, jam कर देना. Moving on to the next word, contumacious. Contumacious शब्द का अर्थ होता है stubbornly disobedient. बहुत disobedient है, stubbornly disobedient है, govern नहीं कर सकते आप उनको, वो ungovernable है. So someone who's rebellious, someone who's stubbornly disobedient, someone who's ungovernable. As you can see in the image that the elephant is appearing to be someone who cannot be governed very easily, तो उसके लिए हम contumacious शब्द का प्रयोग करेंगे. Let's look at the usage of the word contumacious. He was warned that his contumacious conduct would not be tolerated. So when you're very obstinate, as you can see in the image again, so here as you can see, this year I'm not going to pull your sled. So Santa को बोला जा रहा है by his dears. Contumacious, obstinately resisting authority, someone who's disobedient. Important synonyms है recalcitrant, disobedient, defiant, intractable, unruly. All these are important synonyms of the word contumacious.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कूडोज। कूडोज का अर्थ होता है जब आप किसी को प्रेज कर रहे हैं आफ्टर देयर अकम्पलिशमेंट। सो कूडोज, प्रेज और ऑनर फॉर एन अचीवमेंट। ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम अ सिमिलर ग्रीक नाउन कूडोज, जिसका अर्थ है प्रेज और रिनाउन। लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड कूडोज। द कंपनी हैज अर्न्ड कूडोज फॉर रिस्पॉन्डिंग सो क्विकली टू कस्टमर्स कंसर्न्स। मूविंग ऑन टू द क्विज ऑफ द डे, लेट्स जस्ट स्टार्ट। एब्स्टिनेंस शब्द का अर्थ होता है जब आप रिस्ट्रेन कर देते हैं अपने आप को, पर्टिकुलरली अल्कोहल या अदर चीज़ों में नहीं जाते हैं। सो गिविंग अप और रिस्ट्रेनिंग वन सेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग इन प्लेजर्स। बिलाए शब्द का अर्थ होता है टू कॉन्ट्रडिक्ट, टू कॉल इन टू क्वेश्चन, टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, capricious। capricious शब्द का अर्थ होता है whimsical, fickle, temperamental. As you can see over here, fickle, whimsical, temperamental. Debonair, a confident, stylish and a charming fellow. उसके लिए debonair शब्द का प्रयोग किया जाता है someone who's confident, stylish and charming. Elicit, to evoke, to draw out. Elicit this response. So whenever you try to evoke or draw out. Ferment, एक तरह का turmoil, upheaval अगर हो रहा है उसके लिए ferment शब्द का प्रयोग किया जाता है. So agitation, upheaval, turmoil. मूविंग ऑन, गाउज। गाउज शब्द का अर्थ है टू एक्सकवेट। जब आप स्कूप आउट करते हैं, जब आप डिग करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, जस्ट लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, उसके लिए हम गाउज शब्द का प्रयोग करते हैं, टू टीयर आउट। imperturbable, imperturbable, someone who is not easily disturbed, बहुत ही calm है. So someone who is not easily disturbed will be imperturbable. You can cross check the answers in the cheat sheet, and in case of any questions you can mention that in the comment section.